Want to make interactive websites, application for smart watches, flying robots, mobile apps, games, digital art projects, so many things you can create. So guys, stay on with me. We'll learn JavaScript through which we can make any of these in a fun and simple way. In today's world, JavaScript is the language you should learn. According to PYPL, TUBE, JavaScript comes on top 5 languages in the world we should learn. JavaScript has lot of frameworks which helps developers to use JavaScript with so much ease. In this series of JavaScript, I will teach you the JavaScript concepts from start to end, from beginner to master. We'll do some projects on games, on interactive websites, and in the end, I am 100% sure you will say, yeah, मैं तो JavaScript developer बन गया. Let's begin this video with today's agenda. जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने से पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू HTML एंड CSS. व्हाट इज HTML? HTML है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज which is used to create web pages. आपको वेब पेज में जो भी कंटेंट डालना है तो वो आपको HTML का पेज बनाना होगा और वो वेब पेज ही आपका फर्दर वेबसाइट बनाता है. सेकेंड इज CSS. CSS इज कास्केडेड स्टाइल शीट्स जो यूज होता है किसी भी वेब पेज को ब्यूटीफाई करने के लिए. अगर आपको उसका कलर चेंज करना है, फॉन्ट, स्टाइलिंग, ये सब आप कर सकते हो थ्रू CSS. जब भी आप जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे तो यू शुड नो HTML एंड CSS. उसके बिना आपका जावास्क्रिप्ट इज इनकम्प्लीट फॉर योर इंटरैक्टिव वेबसाइट, फॉर वेबसाइट डिजाइनिंग. Now this is HTML and CSS. जहां पर हम HTML बोल रहे हैं कि सिर्फ एक कंटेंट प्रोवाइड करता है फॉर द वेब पेज. सो आप देख रहे हैं HTML यहाँ पर एक मैन का फिगर है बट दैट इज ब्लैंक विच हैज नो कलर्स. एंड थ्रू CSS you can put colors, you can do styling, you can change its attributes. So through CSS आप उसको beautify कर सकते हैं. So that is the basic difference between HTML and CSS. So let's meet JavaScript now. JavaScript is a scripting language that allows you to implement complex features on web pages. JavaScript एक scripting language है. तो before going further हम लोग बात करते हैं scripting language क्या होता है. Scripting language एक ऐसी language है जिसके पास set of instructions होते हैं to perform a certain task. ये दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा, C++ उसको गाइडेंस प्रोवाइड करती है, मतलब कंट्रोल देती है. जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. इट अलाउज यू टू इम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स फीचर्स. वो कॉम्प्लेक्स फीचर क्या हो सकते हैं? आपको डायनेमिकली अपडेट करना है कोई कंटेंट, यू कैन कंट्रोल मल्टीमीडिया, you can animate those images and pretty much everything. You can do anything with JavaScript now. Now to understand this in a simpler term, the JavaScript language is used to write programs that run on web pages. JavaScript can control how a web page looks or make the page respond when a viewer clicks a button or moves the mouse. कोई viewer अगर बटन को क्लिक कर रहा है, माउस को मूव कर रहा है तो पेज कैसे रिस्पॉन्ड करे, जावास्क्रिप्ट वो एक्शन प्रोवाइड करता है, वो कंट्रोल प्रोवाइड करता है. द क्वेश्चन कम्स टू आवर माइंड, व्हाई टू लर्न जावास्क्रिप्ट as there are hundred of programming languages we can use. So why to learn? The actual reason is there are many reasons to learn it. The first one is it is easy to learn. Second is you can use JavaScript. Anyone can use JavaScript without purchasing a license. यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए JavaScript के लिए, कोई परचेज नहीं करना है, कोई सॉफ्टवेयर कोई डाउनलोड नहीं करना है. आपको सिर्फ JavaScript आना चाहिए एंड यू कैन राइट इन नोटपैड एप्लीकेशन और आप JavaScript प्रोग्राम लिखिए और उसको HTML के साथ मर्ज कीजिए और अपने वेब ब्राउजर पे रन कीजिए. दैट इज द इजीएस्ट थिंग. So JavaScript doesn't need any license, any software. Third is JavaScript is an interpreted language. What do you mean by interpreted languages? इसको कभी भी प्रीलिमिनरी कंपाइलेशन नहीं चाहिए, इसको कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती है जैसे जावा और लैंग्वेजेस को कंपाइल करने की जरूरत पड़ती है. इन ऑर्डर टू राइट एंड रन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम आपको सिर्फ वेब ब्राउजर चाहिए और सारे वेब ब्राउजर कम्स विद अ जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर. तो वो अंडरस्टैंड करते हैं कैसे किसी जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को रीड करना है और रन करना है. सो देयर इज नो नीड ऑफ
another software or compiler. Fourth point is it has rich set of frameworks. बहुत सारे frameworks हैं like Node, Meteor, Vue and several more जिसके through आप JavaScript program easily write कर सकते हैं and you can create anything. आप बहुत कुछ बना सकते हैं. Now next is हमने पढ़ा HTML क्या है, which gives the content, CSS which beautifies that HTML page and JavaScript which provides the action, which provides the control. तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख रहे होंगे. तो जावास्क्रिप्ट में यहाँ पर आईज ब्लिंक कर रही है, द पर्सन इज मूविंग, तो दैट इज जावास्क्रिप्ट. It gives the action to our web page. This is the basic difference. Now next is पहले जो जावास्क्रिप्ट था वो सिर्फ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज था. अब जावास्क्रिप्ट सर्वर साइड भी है और क्लाइंट साइड भी है. इसको आगे बढ़ने से पहले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट साइड एंड स्क्रिप्टिंग सर्वर साइड? जो भी इंटरेक्शन होगा वेबसाइट का वो यूजर के साथ होगा और आपके ब्राउजर पे होगा, दैट इज क्लाइंट साइड. बट वही एक्शन परफॉर्म कर रहा है, कोई भी टास्क परफॉर्म हो रहा है सिर्फ सर्वर पे, तो दैट इज सर्वर साइड. अब ये सर्वर साइड कब बना? नोट करके एक फ्रेमवर्क डेवलप हुआ जो आपने जावास्क्रिप्ट के साथ मर्ज किया, तब ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट बनी. Now JavaScript became isomorphic. What do you mean by isomorphic? Is it is universal in nature. आप JavaScript को client side और server side किसी भी तरीके से use कर सकते हैं. It gives you plenty of applications. Now next is where you can use JavaScript. Here I have mentioned the applications. कहाँ पर आप JavaScript use कर सकते हैं with the frameworks involved with it. कि आप इन फ्रेमवर्क्स को यूज करके आप अपनी एप्लीकेशन और इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं. तो द फर्स्ट पॉइंट इज इंटरैक्टिव वेबसाइट. एज यू नो जावास्क्रिप्ट को आप HTML के साथ CSS के साथ मर्ज करके इंटरैक्टिव वेबसाइट बना सकते हैं, डायनामिक वेबसाइट बना सकते हैं विद द एनिमेशन ऑफ इमेजेस, स्क्रोलिंग योर टेक्स्ट, चेंजिंग द कंटेंट डायनेमिकली. तो ये आपका एक डायनेमिक वेबसाइट बनाने में जावास्क्रिप्ट बहुत हेल्प करता है. नाउ नेक्स्ट इज वेब एप्लीकेशन. आप कोई भी वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं. जावास्क्रिप्ट गेन द एबिलिटी टू क्रिएट रोबस्ट वेब एप्लीकेशन. वेब एप्लीकेशन जैसे नेटफ्लिक्स, उबर, लिंक्डइन, ये सब जावास्क्रिप्ट में बनी हुई है यूजिंग एंगुलर एंड Vue, Meteor एज द फ्रेमवर्क. तो आप इन फ्रेमवर्क्स को यूज करके वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं थ्रू जावास्क्रिप्ट. नाउ विद द एडवेंट ऑफ नोड फ्रेमवर्क few years ago, JavaScript made its way from the browser into server. Major companies like Walmart, which is using Node as a backend infrastructure. Now next is presentations. आप presentations as websites बना सकते हैं through Reveal framework. So you are familiar with HTML and CSS, so you can easily do that. You can also make mobile applications using Meteor, Titanium frameworks और JavaScript. आप mobile applications बना सकते हैं. You can make flying robots, drones using Node framework और JavaScript. Next is smartwatch apps, that is Internet of Things. आप पेबल जो कंपनी है उन्होंने अपना एक पेबल वॉच बनाया. सो उन्होंने क्रिएट किया पेबल फ्रेमवर्क ऑल्सो फॉर डेवलपर्स टू मेक स्मार्ट वॉच एप्स फॉर पेबल वॉचेस. नेक्स्ट इज गेम्स. अर्लियर जो हमारे वेब ब्राउजर थे वो उनमें आप 3D गेम्स नहीं बना सकते थे. नाउ यू कैन यूज जावास्क्रिप्ट HTML5 कैनवस टू क्रिएट योर गेम्स. Next is web servers. Using Node and Express JavaScript frameworks, you can make robust web servers. Now the next point is digital art projects. You can make 3D art projects on your browser with the use of HTML5 canvas. So these were the applications जहाँ पर आप JavaScript use कर सकते हैं. बहुत सारी और applications हैं, बहुत सारे और uses हैं JavaScript के. तो you should learn JavaScript. That's why it comes under the top 5 programming languages to learn. That's it in this video. In the next video, we'll talk about where to use JavaScript code in our HTML page and writing our first JavaScript program. Till then, subscribe to my channel. If you really like my video, give me a thumbs up and press the bell icon for more updates. If you have any queries, write in the comment section. And thank you guys and happy learning. Bye-bye.